Right, guys? I repeat, recording of transactions from journal or from any of the subsidiary books to ledger is called posting. Posting is a sub process of accounting. Accounting is a very big process in which we have various sub processes. One of them is journalizing. So here, when I entered an entry or I recorded a transaction here, I actually journalized that transaction. When I explained you journal book, I told you about that. Now we are doing posting from journal into ledger. Now in ledger, which account we are preparing first? Cash account. Now listen to me carefully and look at it, guys. Understand this, right? In the first transaction, cash account has been debited, correct? So we will record this transaction on the debit side of cash account in ledger. And what is the debit side? The left hand side. We will record that transaction on the debit side, not on the credit side. Why? Because in that journal entry, cash account is getting debited. Are you getting my point? कैश अकाउंट वहां पे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है. तो कैश अकाउंट में हम डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड करेंगे, राइट? In particulars column, we will write name of the opposite side. Cash account is getting debited, so the opposite side account is what? Credit side, that is capital account. So in particulars column, we will write capital account. Am I clear? In date column, we will write date of the transaction. So on 11 July 2023, we will write capital account. Am I clear? Traditionally, debit side is prefixed with a to and credit side is prefixed with by. Am I clear? This is done since years. There is no logic, no reason behind it. Right? So we have written here a capital account. Now in the amount column, we will write amount of cash because we are doing posting not in capital account, but we are doing posting in cash account. What was the amount of cash there? It was rupees 2 lakhs. So 2 lakhs we will write an amount column. Am I clear? From which page number of journal we got this transaction? From page number 1. And that is what would be recorded here. To which page number of ledger that transaction has gone? It has gone to page number 1 of ledger. And that is why here we will write page number 1. So looking at this, one can understand that okay, cash account has been maintained in ledger on page number 1. Very simple and easy. Am I clear, guys, or not? This we do once posting is done in ledger. ये हम पेज नंबर यहाँ पे तब डालते जब हम पोस्टिंग कर चुके होते हैं ताकि पता चल जाए अच्छा इसकी पोस्टिंग हो गई है. जिसका पेज नंबर नहीं डला हुआ है, जिसका लेजर फोलियो नहीं है, जिसका मतलब उसकी अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई है. ये समझ में आया गाइस आप लोगों को? आशुतोष, शुभी, Yes, sir. Aryan, Anushka, have you understood this or not? Yes, sir. Yes, sir. बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? मान कैश अकाउंट बनाया पर कैश अकाउंट के पर्टिकुलर्स हम लिखेंगे अपोजिट साइड का नाम. कैश अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है तो अपोजिट साइड में क्या है? कैपिटल. तो हम कैपिटल लिखेंगे. क्लियर है? क्यों? अभी मैं आपको बता दूंगा ऐसा क्यों करते हैं. Should I go ahead? Have you understood the posting of this? In the second transaction, we have created cash account. So in cash account and ledger, on the credit side, this transaction would be recorded because cash account here has been credited. Clear? But in particulars, we will write name of the opposite side, and that is bank account. On which date? 12th July. With which amount? The amount of cash, 1 lakh 50. So here on 12th July, we will write by bank account. What was the amount?
1,50,000। इस तरह से हमने सेकंड जर्नल एंट्री जिसमें कैश अकाउंट इन्वॉल्व था उसकी भी पोस्टिंग कर दी। ये समझ में आया गाइस आप लोगों को या नहीं आया? राइट एवरीवन? शुभी, आशुतोष, आर्यन, Anushka, have you understood this also? Yes, sir. Yes, sir. Right. Now, let me tell you one thing, guys. Academically, you do not need to make this column because you would never be given voucher number or number of the documents through which journalization was done. You would also not be given page numbers, but you still have to make at least this column. So even if while preparing ledger you avoid column of voucher number both the sides, that can be done, but you should not miss the column of journal folio. Am I clear? Okay. Now we move to the third transaction. See, I have intentionally taken all the transactions here in which cash account is involved so that I could tell you about posting of each type in one single account, that is cash account. Rest you have to do yourself. Clear? In the third transaction, again cash account is getting created. On the opposite side, we have purchase account. So on the create side of cash account, we will write in particulars column buy purchase account on 15 July with rupees 15,000. क्योंकि कैश अकाउंट क्रिएट हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम 15 जुलाई को अपोजिट साइड का नाम लिखेंगे, उसके पहले लिखेंगे बाय, और वो था हमारा परचेजेस अकाउंट। अमाउंट वाज 15,000। आई होप गाइस यू हैव गॉट दिस। यस और नो ऑल? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ ट्रांजेक्शन है हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम 18 जुलाई को लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट विद 11,000 रुपीज। व्हाट दिस गाइस और नॉट? अब ये तो अभी बहुत इजी था गाइस, राइट? अब हम इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस भी देखते हैं। ये फिर इजी आ गया क्योंकि यहाँ पे एक इजी का मतलब है एक डेबिट और एक क्रेडिट। इन सारे ट्रांजेक्शन में ऐसे ही हो रहा है, देयर इज ओनली वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, राइट? So let's post this also. So on the credit side of cash account on 25th July, we will write buy electricity expenses account with rupees 520, right? Clear guys, right? Now, if you see this account, this journal entry, in this we have more than one debit and more than one credit. As of now, we have to do posting in cash account only, right? Now, opposite side we have two accounts. ओके इसके पहले 25 जुलाई के कुछ ट्रांजेक्शन्स और थे। ये सबसे कॉम्प्लेक्स वाला है जिसमें एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट है। इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। पहले 25 जुलाई का एक ट्रांजेक्शन ये देखते हैं। ये मैंने बाद में किए थे, आप लोगों को पता है उस दिन, राइट? यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है पर अपोजिट साइड में दोनों दो अकाउंट्स हैं। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम दोनों के नाम लिख देंगे अपोजिट साइड वालों के। सो ऑन 25 जुलाई in cash account, on the debit side, we will write two commission account and two output IGST account with their respective amounts, right? So on 25th July 2023, we will write two sales account and two output IGST account. Sales the commission, okay, I'm sorry.
Why I have put this, guys? Because they both are of the same date. Means they both are of the same transaction, right? The amount was 1200 and 144, I think. इसका मतलब हमने कैश अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट किया है? 1344 रुपीज से। और उस जर्नल एंट्री में भी यही हो रहा था। कैश अकाउंट गॉट डेबिटेड विद 1344 एंड दैट इज व्हाट आवर पर्पस इज व्हाइल डूइंग द पोस्टिंग। पोस्टिंग करते समय आपको ध्यान रखना है, जिस अकाउंट में आप पोस्टिंग कर रहे हैं वो अकाउंट जितने रुपीज से डेबिट या क्रेडिट हुआ उतने से ही आपके लेजर अकाउंट में वो चीज डेबिट या क्रेडिट होनी चाहिए। क्लियर? Let's see this next transaction, 25th July. Here, cash account is getting created, and on the opposite side, again, we have two accounts, rent and input IGST. तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय रेंट और बाय इनपुट IGST 25 जुलाई को 3000 रुपीज से और 540 रुपीज से। सो बाय रेंट एंड बाय रेंट अकाउंट and by input IGST account 3540. Is it clear, guys, or not? Okay. So we are done with this transaction also. Now look at this one again. This is of 25th July. Cash account is getting debited, but on debit side there is one more account, that is discount allowed account, and on opposite side sales account is there. We have to take care of opposite side account. So कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट किसका लिखेंगे? कैश का, क्योंकि हम कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं। हम सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग नहीं कर रहे, इसलिए हम सेल्स का अमाउंट नहीं लिखेंगे। हर बार हमने वही किया है, गाइस। अभी हमने बस यहाँ ये किया था, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने दोनों अकाउंट लिखे, तो इन दोनों का अमाउंट लिखा था, पर इन दोनों का अमाउंट मिला के उतना ही हो रहा था जितना कैश का अमाउंट है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसके अपोजिट साइड में है सेल्स अकाउंट। सो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, बट अमाउंट वी विल राइट ऑफ 2940। Got this? So here we will write to sales account on 25th July 2023 with Sir, there would be no mention of 2940। discount allowed account. डिस्काउंट अलाउड हम नहीं लिखेंगे। अब देखिएगा ये जो भी हमने पूरी पोस्टिंग की है, या जो हमने लेजर में कैश अकाउंट बनाया है, इसका मतलब क्या है? Why do we write names of opposite side? You know that cash account is debited only when we receive cash. So this all actually signify receipt of cash. तो हमें 2 लाख का कैश मिला 11 जुलाई को। अब कैसे मिला ये कैश? इसलिए हम अपोजिट साइड का नाम लिखते हैं। कैसे मिला? ओनर वो कैश लेके आया। दैट इज व्हाई कैपिटल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड देयर, और पर्टिकुलर्स में हमने कैपिटल अकाउंट लिखा है। फिर हमें 11,000 रुपए मिले 18 जुलाई को, क्यों मिले? सेल्स की वजह से। फिर हमें 1200 रुपए मिले, क्यों मिले? कमीशन के। और 144 क्यों मिले हमें? आउटपुट IGST के। 2940 क्यों मिले? सेल्स के मिले। तो डिस्काउंट अलाउड की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। हैव यू गॉट दिस, गाइस, और नॉट? आई एम आस्किंग ऑल। प्रियांश, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. अनुष्का, आशुतोष, आर्यन, शुभी, हैव यू गॉट दिस? Yes, sir. Yes, sir. राइट। सर वो डिस्काउंट Yes, sir. अलॉटेड क्यों ना है? हाँ, क्या वो बोल रहे हैं आप? डिस्काउंट अलॉटेड क्यों नहीं आया सर, वो डिस्काउंट वाला? डिस्काउंट अलाउड इसलिए नहीं आया कि हमें, देखिए, अपोजिट साइड में सिर्फ एक ही अकाउंट था, सेल्स अकाउंट। हमने सेल्स अकाउंट यहाँ पे लिख दिया पर्टिकुलर्स में, और अमाउंट किसका लिखा? कैश का। क्योंकि हमारे पास कैश कितना है? 2940 आया है। ये जो गाइस लुक एट हियर ऑल, ये 2940 सेल्स का अमाउंट नहीं है। हमने सेल्स 2,940 रुपए की नहीं की है, हमने सेल्स की है यहाँ पे 3,000 रुपए की। पर हमने डिस्काउंट दिया 60, तो हमें कैश कितना मिला? 2940।
पर ये 2940 कैश मिला किस लिए है? सेल्स के लिए। इसलिए पर्टिकुलर्स में सेल्स, लेकिन अमाउंट किसका लिखा? कैश का, क्योंकि पोस्टिंग हम कैश अकाउंट में कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसमें क्या किया था, क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट में हमने पर्टिकुलर्स में लिखा था बाय रेंट, रेंट और बाय इनपुट आईजीएसटी, और अमाउंट इनका लिखा था क्योंकि इन दोनों का अमाउंट मिला के ही 3540 हो रहा है। उसका मतलब क्या हुआ, कैश अकाउंट क्रिएट हुआ, मतलब हमने कैश दिया। कैश अकाउंट क्रिएट तभी होता है जब कैश हमारे यहाँ से जाता है, मतलब किसी को पे करते हैं, राइट? तो क्यों गया कैश? 3000 का कैश गया रेंट के लिए, और 540 का कैश गया है इनपुट आईजीएसटी के लिए। So total cash paid by us is 3540. But here in this case, we do not need to write anything about discount allowed, because discount was given not from cash but from sales. So sales के अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड आएगा। जब हम लेजर में सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो वहां डिस्काउंट अलाउड दिखाएंगे। जब हम लेजर में सेल्स अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि सेल्स अकाउंट के अपोजिट में कौन कौन से अकाउंट्स हैं? दो अकाउंट हैं, कैश और डिस्काउंट अलाउड। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हम दिखाएंगे कैश और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विद 2940 एंड विद 16। तो उससे सेल्स अकाउंट कितने से क्रिएट हो जाएगा? अल्टीमेटली 3000 से। मतलब क्या होगा उसका, कि सेल्स 3000 की हुई और उसके बदले में कैश मिला है सिर्फ 2940, और बाकी का 60 हमने डिस्काउंट दिया है। राइट आर्यन, आप क्लियर है ये? यस सर। व्हाट दिस गाइस? फिर यहाँ पे कैश अकाउंट क्रिएट हो रहा है, ये और ये ट्रांजेक्शन एक जैसे ही है। जैसे यहाँ कैश अकाउंट था, उसके अपोजिट साइड में सिर्फ एक ही अकाउंट था और बाकी का दूसरा अकाउंट कैश के साइड में ही था। ऐसे यहाँ पे भी है, कैश अकाउंट क्रिएट हो रहा है, उसके अपोजिट साइड में एक अकाउंट है, और जो तीसरा अकाउंट है वो कैश के साइड में ही है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? बाय परचेज, और अमाउंट कितना लिखेंगे? 4950, राइट? सो 25 जुलाई 2023 को हम यहाँ लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट 5950, 4950 के। क्लियर है? कैश अकाउंट को हमने क्रिएट किया है इन सारे अमाउंट से। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख हमने बैंक में जमा किए थे, 15,000 से हमने कुछ परचेज किया, 520 का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पे किया, 3,000 का रेंट पे किया, रेंट पे इनपुट आईजीएसटी 540 पे किया, और फिर कुछ परचेज किया 4950 का। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग why ledger is useful for a business? Looking at one place, one can know all the details related to cash account, कि कहाँ कहाँ से कैश आया और कहाँ कहाँ कैश गया। Am I clear guys or not all? बोलिए। क्यों आएगा? वो कैश के अपोजिट साइड में था क्या? तो फिर नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड आया था क्या यहाँ पे? वो कैश के साइड में था क्या? कैश के अपोजिट साइड में था क्या? नहीं था। एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश के अपोजिट साइड में तो सिर्फ सेल्स था, तो हमने यहाँ पे सेल्स लिखा और यहाँ पे अमाउंट लिखा कैश का। सेम ऐसे ही हमने यहाँ किया। यहाँ एंट्री क्या थी हमारी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। तो कैश के अपोजिट साइड में क्या था? सिर्फ परचेज था, तो हमने यहाँ परचेज लिख दिया और अमाउंट किसका लिखा? कैश का। इज इट क्लियर टू ऑल? हैव यू गॉट दिस अनुष्का, आशुतोष, आर्यन, Yes, sir. शुभी, प्रियांश? हेलो, गुड इवनिंग। बोलिए बोलिए। मैं आपको कॉल करता हूँ बस। आपका नंबर ये ना ये? थैंक यू मैम। राइट गाइस, नाउ द कॉम्प्लेक्स वन। सो अभी तक जो मैंने आपको पोस्टिंग बताई है उन ट्रांजेक्शन बताई है जहां पे कैश के अपोजिट साइड में एक अकाउंट था, या फिर कैश के अपोजिट साइड में एक से ज्यादा अकाउंट थे, या फिर कैश के साइड में एक अकाउंट और था। वो सारे हमने देख लिए हैं। अब कॉम्प्लेक्स वंस, जिसमें डेबिट साइड में भी एक से ज्यादा अकाउंट है और क्रेडिट साइड में भी एक से ज्यादा अकाउंट है। आई होप यू हैव गॉट मी गाइस। यस, सो दैट इज द ट्रांजेक्शन ऑफ 26 जुलाई। यहाँ पे क्या हुआ है?
हमें पैसा मिला है कैश के फॉर्म में भी और बैंक मनी के फॉर्म में भी। क्यों मिला है? सेल्स के लिए और उस पे लगने वाले जीएसटी के लिए। करेक्ट। हम इसको कैसे पोस्ट करें? अपोजिट साइड में दो अकाउंट हैं। हम अभी तक यूजुअली क्या करते थे, अगर यहाँ पे सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट आईजीएसटी होता तो हम इन दोनों के अमाउंट लिख देते और उतना ही अमाउंट हमारा कैश का होता 5900। अगर बैंक अकाउंट यहाँ पे नहीं होता तो की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। लेकिन अब यहाँ पे अपोजिट साइड में दो अकाउंट हैं, उनका टोटल मिला के 5900 हो रहा है। अगर हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स और टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट लिख के इनका अमाउंट लिख देते हैं तो दैट वुड नॉट बी इक्विवेलेंट टू कैश अमाउंट। करेक्ट। तो फिर हम इसको क्या करें? तो इसके लिए हमें पहले इस ट्रांजेक्शन को स्प्लिट करना होगा, इस जर्नल एंट्री को पोस्टिंग के लिए स्प्लिट करना होगा गाइस। कैसे वो आपको समझा रहा हूं मैं। This journal entry needs to be split into two or more than two so that it becomes easy for us to post that into ledger. अब ये ट्रांजेक्शन अल्टीमेटली किस चीज का है ये बताइए मुझे। सेल्स का है, राइट। सेल्स के साथ क्या लगा है? जीएसटी। जो टोटल अमाउंट है उसका आधा पैसा उसने कैश में दिया और आधा पैसा चेक के थ्रू हमें मिला है कस्टमर से, राइट। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। सेल्स का हाफ अमाउंट ले लें 2500, इसका हाफ अमाउंट ले लें 450, तो ये हो गया 2950। क्लियर। और फिर इसका दूसरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा हमारा, दूसरी जर्नल एंट्री हो जाएगी बिल्कुल ऐसी, बस कैश के बदले बैंक आ जाएगा। So bank account debit with 2950, 2500, 450. The sum total of these two entries is this one, guys. Am I clear, guys, or not? The above entry has been split into two. Right? Now see, in journal you will record this transaction only. You do not need to record this transaction anywhere. But while posting this, you have to keep this in mind. You should be so much practiced that you could split such a journal entry into two in mind and can then post it into ledger. ये आपको नहीं करना है कहीं पे। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? हैव यू गॉट मी आशुतोष, आर्यन, प्रियांश, शुभी? सर वो आपने यस सेल्स सर, को भी यस ऑफ सर। किया है क्या? क्या बोल रहे हैं आर्यन? सर वो आपने सेल्स को भी ऑफ करा क्या? क्या किया? देखिए सेल्स हमने क्रिएट किया कितने से, यहाँ पे दोनों जगह 2500 से, तो अल्टीमेटली सेल्स कितने से क्रिएट हो गया? 5000 से। आउटपुट आईजीएसटी कितने से क्रेडिट था यहाँ पे? 900 से। उसको भी हमने हाफ में स्प्लिट कर दिया क्योंकि हाफ मनी हमको कैश में मिला है और हाफ बैंक में मिला है। तो 900 का 450 यहाँ आ गया और 450 यहाँ आ गया। कैश अकाउंट में 2950 डेबिट हो रहा है, वो यहाँ पे भी डेबिट हो रहा था। बैंक में 2950 डेबिट हो रहा है, वो यहाँ पे भी हो रहा था। क्लियर है आर्यन इतना? यस सर। कुछ डाउट हो तो बताइए, मैं क्लैरिफाई कर सकता हूँ उसको। नो सर। हाँ बोलिए मानवी। हाँ, यहाँ से हम पोस्टिंग कैसे कर सकते हैं बताइए आप? हैं? नहीं समझे, जोर से बोलिए थोड़ा सा। अभी कैश वाले जा रहे हैं, हमको पोस्टिंग सारे अकाउंट्स में करनी है। अभी तो हमने सिर्फ कैश अकाउंट से शुरुआत की है। लेजर में यू विल हैव ऑल द अकाउंट्स, है ना? बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? कैश अकाउंट बना रहे हैं।
हमने इसको सेपरेट इसलिए किया है ताकि हम इसकी इसकी पोस्टिंग कर सकते हो क्या? अभी तक जो मैंने मेथड बताया उसे पोस्टिंग कर सकते हैं क्या? एक और मेथड है वैसे पोस्टिंग करने का, पर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो नहीं यूज यूज करते हैं एकेडमिकली। रियल लाइफ में वही मेथड यूज करते हैं। रियल लाइफ में इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं होती है। बट फॉर यू पीपल, इफ यू follow the method which is used in real life, you will get confused and your evaluator in school also get confused. He himself might not be knowing that method. So it's better to follow what he knows, and what he knows, what is mentioned in the book. Are you getting my point? Most of the teachers have never practiced these things in their real life. They learn it from book, they deliver it from the book. तो ये आपको समझ में आया गाइस? आप सबको ये नहीं आया? ये दोनों मिला के ये वाली एंट्री है, कुछ फर्क नहीं है। इसको इस वाले एंट्री को हमने 2 एंट्रीज में स्प्लिट किया है बस। किस बेसिस पे किया है कि आधा पैसा कैश में आया, आधा बैंक में आया, मतलब सेल्स का आधा पैसा कैश के थ्रू आया और सेल्स का आधा पैसा बैंक के थ्रू आया है। अब हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में इजीली लिख सकते हैं। हाँ भाई, हाँ क्लास मैं तो लगाता हूँ शाम को, है ना? कुछ अर्जेंट तो नहीं है ना? ठीक 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 है। So we will do the total of debit side first, guys. For that, we will have a column of debit as I have made it here. So this is 2 lakh 11, 12, 14, 16, 2 lakh 16,000. Then we have 200, 300, 1200, 1700, and 2100. So this is 18,100. And then the last digits are 44 and 40, 84, 84 and 50, 134. So it would be 234. The same total we will write on the credit side. Why? You will soon understand it. Right? The process of totaling, as I did, is called casting. इस प्रोसेस को हम कहते हैं गाइस कास्टिंग। राइट? अब ये टोटल में से, ये टोटल किस चीज का है? डेबिट साइड का। मतलब इतना कैश हमारे पास महीने भर में था, उसमें से हमने इतना कैश पे कर दिया, तो बचा कितना? उसके लिए हमको इस टोटल में से इन सब का टोटल लेस करना होगा। So let's first find out total of this side. I'm writing it here as of now. So 150 plus 15, 165, then 168, then 172, then 178, and 179. Then the last three digits, that is hundreds place. So 500 plus 500,000, 1900, 2700, and 2900. So this would be 81,900. Then last two digits 20 plus 40, 60, 60 plus 50, 110, then 170 and 230. So this would be 130 and this would be 1 lakh 82. Got this guys or not? मतलब हमने साल भर में इतना कैश, सॉरी महीने भर में इतना कैश पेमेंट किया जबकि हमारे पास था इतना। So 2 lakh 18, 234 minus 1 lakh 18, 130 is our balance, for which we write buy balance CD at the end of the month, that is on 31st July 2023. And that is how much? 18 and 18, 36,000, and then 130 and 70 and 134 means 104. So this is the balance of cash left at the end of the month of July. मतलब जुलाई मंथ के एंड में हमारे पास इतना कैश बैलेंस था। आ रहा है गाइस आप सबको समझ में? दोस्त और ऑनलाइन, अनुष्का, आशुतोष, आर्यन, प्रियांश एंड शुभी। सर आपने वो टोटल sir. पर्टिकुलर्स में क्यों लिखा है? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ अभी मैंने माइनस करके लिखा था, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से।
So guys, the process of doing totals is called casting. The process of getting balance at the end of a month is called balancing. Now this balance is which balance? I'm asking guys. ये 36,104 का बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस है? ये डेबिट डेबिट बैलेंस है। डेबिट ये डेबिट बैलेंस है, भले ही हमने इसको क्रेडिट साइड में लिखा है, पर है ये डेबिट बैलेंस क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा था क्रेडिट साइड से, इसलिए ये बैलेंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो दिस बैलेंस एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द डेबिट साइड. एम आई क्लियर? आई एम आस्किंग गाइस, समझ में आया? डेबिट साइड हमारा ज्यादा था क्रेडिट साइड के टोटल से, इसलिए जो यहाँ पे हमको 36,104 बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ा, ताकि ये वाला साइड और ये वाला साइड का टोटल सेम हो जाए. वो है हमारा असल में डेबिट बैलेंस, राइट? और ये सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन. मतलब इस बैलेंस को हम, ये जो बैलेंस हमारा 36,104 का रहा है, इस बैलेंस को हम जुलाई मंथ से अगस्त मंथ में कैरी डाउन कर रहे हैं. आई होप गाइस यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच एट लीस्ट. यस और नो? यू ऑल राइट गाइस? स्टार्ट नोटिंग इट डाउन फ्रॉम हियर गाइस एंड डू इट फास्ट. Guys, 1 second. One second, guys. Hold on. Before doing this, you do one thing. You note down this tomorrow. First, you note down the split. So हमने यहाँ पे दो ट्रांजिशंस को, इस जर्नल एंट्री को स्प्लिट किया है. तो आप वापस 26 जुलाई की डेट डालिए आपके रजिस्टर में कहीं, और उसके बाद ये दोनों जर्नल एंट्रीज लिखिए. This you are writing only for your understanding, guys. In exam, you do not need to do this. Tomorrow, remind me to know as how in real life such transactions are posted in ledger, right? I hope guys you all are noting down this.